I think there should be uh, a responsibility in the minds of the artist for sure. There has to be a responsibility as a person who's propagating a certain kind of cinema. And um, there's no, if there's no value addition in your film, I think there's no point of that cinema, because cinema is the opinion leader of a country. People take it very seriously. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का तो पता नहीं, गबरू ऑफ ऑल टाइम तो मनु मुंजाल हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि मुझे तो चंडीगढ़ करे आशिकी का भी नहीं पता, लेकिन देश तो बहुत जरूर प्यार कर रहा है आपसे इस वक्त आयुष्मान खुराना। आई नीड टू गेट इट स्ट्रेट टू द पॉइंट, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और चंडीगढ़ करे आशिकी की आशिकी जो फैली है और लोगों को समझ आई है, और वहाँ जिन लोगों तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक पहुँची है, इट फील्स ग्रेट। बट टू बिगिन विद, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट आई हैव टू गिव यू एज अ फेलो पंजाबी। पंजाबी तो मतलब एकदम कैंट थी, मतलब फील ही आ गई। धन्यवाद जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये सुनने के लिए मैं पागल हुआ पड़ा था, क्योंकि जब से पिक्चर रिलीज हुई है मेरे को पंजाब से कोई मिला नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच अंकिता। Because as I said, Bollywoodized version of Punjabi and what Punjabi actually is like, and the words, the desi words. I mean, you almost killed it halfway through the film. I'm like, ये सही जा रहा है, या ये mood set हो गया, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। Thank you. But on a serious note, Aishman, if I have to ask you, this is another hatke role from you. I think it has become a norm that you're always pushing the bar. What is it? Are you challenging the societal norms, or your set of whatever standards you have set as an actor? I guess India is a very complex country. हमारे देश में कुछ issues की कमी नहीं है, तो जहाँ जाओ तो 10 issues निकलते हैं। ये भी बात सही है। तो वो जो issue है ना, वो I think that's great fodder for cinema, क्योंकि हमारे देश में अगर एक इशू को, जहाँ एक बड़े इशू को मिडिल क्लास घर में डाल दो या फिर बहुत ही कॉन्जर्वेटिव फैमिली में डाल दो, तो उसमें कॉमेडी निकलती है वहाँ से। लेकिन अगर हम उसी इशू को हम किसी प्रोग्रेसिव फैमिली में डाल दें, वहाँ कुछ होगा ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए ना हमारे देश में कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स बहुत है, सो इशूज़ की कमी नहीं है। एंड एट द सेम टाइम मैं बीच बीच में अलग फिल्में भी करना चाहता हूँ, जैसे अंधाधुन है, आर्टिकल 15 है, अनेक अब आने वाली है, एक्शन हीरो आने वाली है, सो दैट्स देयर। So it's both ways. Yeah. If a transgender actor would have played this part, for which this entire conversation was going around, do you think it would have changed the way the film is perceived, or are we just mixing this? We're going a little too harsh on cinema. I mean, it's an actor's job to portray any kind of role, but Vani's role just underwent too much scanner even before it was hit the theaters. Do you think that conversation was needed? मैं तो ये बोलता हूँ कि ट्रांस गर्ल्स को तो एक cis girl का भी रोल करना चाहिए। Exactly. Because trans women are also women. Women. So, but at the same time, this is also a flip side of cinema. Commercial cinema, I'm talking about. Moving forward, I think no cis head girl should play a trans girl on screen. There should be representation for sure. लेकिन पहली conversation बहुत जरूरी थी। तो इस फिल्म के जरिए पहली conversation हुई है, लोगों को पता तो चला है पहले कि ट्रांस होता क्या है। हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांस क्या होता है। उनको ये भी नहीं पता कि आप अपना जेंडर बदल सकते हैं। मैंने अपने वॉचमैन से पूछा कि तुम्हें पता है ऐसा होता है? क्या मजाक कर रहे हो सर, उनको पता ही नहीं है। उनके लिए वो वर्ड ही सिर्फ किन्नर और हिजरा से आगे बढ़ते ही नहीं है, वो कॉन्वर्सेशन आगे जाती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले ये इनको इंट्रोड्यूस तो करो, ABC से शुरू करो, बेबी स्टेप्स लो उस तरफ, बट मूविंग फॉरवर्ड अब उनको पता चला है तो आगे जाकर ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ट्रांस गर्ल को ही प्ले करना चाहिए। I also asked you this question, Ayush, because जब बाला आई थी, I know भूमि also had to undergo this entire stress कि आपने अपना skin color इतना dark क्यों किया, but her answer was, as an actor it's a requirement. Now I can't pass on a good role just because I don't look a certain skin color. Does it happen in this case also, just because you don't look or you are not a certain part? Ideally कलर चेंज नहीं होना चाहिए आइडल एनवायरनमेंट में, और हमारा सिनेमा भी ग्रो कर रहा है। Exactly. अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। हम वी कैन नॉट बी आइंग इंडियन सिनेमा विद द वेस्टर्न लेंस। Of course. वो वी आर रीचिंग देयर, वी आर ऑलमोस्ट देयर। इनफैक्ट OTT में तो हम बाउंड्रीज पुश और कर रहे हैं, वी आर मोर प्रोग्रेसिव ओवर देयर। वहाँ ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन पाताल लोक में हो चुकी है, और आने वाले टाइम पे आप वहाँ पे देखेंगे भी रिप्रेजेंटेशन।
सो आई गेस ये हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं उस तरफ. टाइम लगेगा. हाँ टाइम लगेगा पर इतना भी नहीं लगेगा. इतना भी लगेगा. अगले साल हो जाएगा. आयुष्मान है ना अभी 2-4 और फिल्में हम सॉर्टेड है. Another thing that stood out, Ayushmann, in this entire thing was Manu के character में जो एक बहुत खास बात थी when he understands that what Vani's gender is, but to make him himself understand, he seeks a professional help. He goes to the psychiatrist and tries to understand. I found it probably the most progressive scene in the entire film. That for a man who's saying कि मैं government school से पढ़ा हूँ, मेरी इतनी understanding नहीं है subject की, but I want to understand how to give you the kind of respect and your gender identity. What the scene meant to you? Because probably for me that was the scene sealer. आप कौन से सीन की बात करें? साइकियाट्रिस्ट की, वो कि एंड में जब बोलता है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा. आप वो and but going to the psychiatrist for me was, I think that was the most perfect moment. अब इसका नजरिया ये है कि मनु मुंजाल plays the common man on the street, जिसको पता ही नहीं है ट्रांस के बारे में. Exactly. और उसी वो नजरिए को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है फिल्म के अंदर. अच्छी बात यह है कि वो रिसर्च खुद कर रहा है. उसको मानवी के कैरेक्टर ने नहीं बताया, तो उसने खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आई शुड डू रिसर्च, आई हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन इररिस्पेक्टिव. वो फीलिंग जा नहीं रही है मेरे मन से, मुझे पता भी चल गया कि वो ट्रांस गर्ल है, आई स्टिल फील फॉर हर. एंड ही स्टार्ट्स डूइंग द रिसर्च. वो खुद पता करता है कि ट्रांस वो जेंडर ऑल्टरेशन कैसे होता है, कैसे सब कुछ होता है, और साइकेट्रिक हेल्प सीख करता है. एंड में बोलता भी है, जब साइकेट्रिस्ट बोलती है ना कि भगवान ने गलती कर दी, उसे सुधार ली. इतनी सिंपल लाइन है वो. And it's not a complicated scene. ऐसे there is no heavy-headed dialogue she is giving you कि ऐसे करो वैसे करो. It's at the same time जब वो ट्रैफिक सिग्नल पर बात करता है ट्रांस से कम्युनिटी मेंबर से, तो और वहाँ भी वो बोलती है, वो शेक्सपियर का कोट डालती है दिल पे कि वो इंग्लिश में बीए है. उससे आपको ये पता चलता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन तो शायद जो नौकरियां होती हैं या फिर बाकी सर्विसेज होती हैं वहाँ पर भी नहीं हो रही है. exactly. उसको भीख मांगनी पड़ रही है, तो to ट्रैफिक go- सिग्नल पे जाना yeah, पड़ रहा है ग्रेजुएट होते हुए. Okay. सो वहाँ पे भी एक आपको एक कटाक्ष जिसे बोलते हैं वहाँ मिलता है. सो दे आर लॉट ऑफ progressive scenes in the film. Like when the person sits with you in the cafe and explains you the concept of love in the most simplest form. I mean, if that person can understand, why can't, as we call the normal person, can't? So I think that's वो बोलता तो है उसके अंदर कि नॉर्मल तो नजरिया होता है. नॉर्मल क्यों होता है? नॉर्मल तो नजरिया होता है. normal नजरिया. That's what he says, मनु मुंजाल. I have to check this with you. This is which I have heard from so many people, so you have to answer. After Akshay Kumar, I think it's you who's probably bringing this, social causes in cinema and at a breakneck speed. I mean, his films and then it's yours. I think you're touted to be that next, can I call you the next AK in that front also? Because it's a compliment for me. I mean, he is doing it, yes, but you are picking up causes which otherwise nobody's ready to touch, maybe. You know, he's a superstar. I have a long way to go, seriously. And I'd look up to him. And I think my filmography and genre is very different from his. He's more commercial. Yeah, he he's is. more mainstream. I try to strike the balance between the two, between critical acclaim and audience appreciation. But if you're comparing, it's actually it's a compliment. Because I find that you do it. Have you found that now, since the film is released and well received by people, and there are conversations starting and people are talking to you about it, do you think such subjects genuinely make a difference to society? Are we able to finally see a difference as an actor plus as a normal human being, or they just fade away with time? I think there should be a responsibility in the minds of the artist for sure. That it has to be a responsibility as a person who's propagating a certain kind of cinema. And if there's no value addition in your film, I think there's no point of that cinema, because cinema is the opinion leader of a country. People take it very seriously. And they're very emotional about it. Of course they are. And आप उन तक पहुंचेंगे कैसे? ये सब्जेक्ट शायद लोगों तक पहुंच ही ना पाता अगर इस पे फिल्म नहीं बनती. इस पे कॉन्वर्सेशन करना इतना मुश्किल है. कैसे करते आप, और उन तक पहुंचते कैसे? So it's a great medium to strike that conversation. And I always keep on doing that. I'm a risk taker. I've made my entire career on the risk, so it will always happen. That's what the Article 15 to CAK, I can say safely that there are the causes which, as I said, nobody is maybe as willing to touch, but they're like, I'll do it. I'll find a story to it.
I don't know if it's the right question to ask, but what has been your attitude towards the transgender community or the people when before you started doing the film? Did it alter your attitude once you were in the project? You of course met people and studied and performed. Was there a shift, or what was your attitude in general? You know, we are all growing, we are all learning. Yeah. As kids, हम देखते थे कि वो शायद जब घर पे कोई बच्चा पैदा होता है, किसी शादी होने वाली है, And coming from north, it's very normal that you हाँ, will have them perform. तो आपका नज़रिया वही बधाइयों था, के लिए. हाँ, तो आपका नज़रिया वही था, तो आप ये जान नहीं पाते थे कि पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ ओपिनियन लीडर्स हैं सोसाइटी के, वो ट्रांस हैं. रिसेंटली मिस ट्रांस ग्लोबल श्रुति सितारा, उसने फिल्म देखी है, शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड गजल दालीवाल, स्क्रिप्ट I was राइटर, coming to that. Ghazal was, Yeah. and I like what she said that you can't expect perfectionism in the first go, but it's so important if people are talking. We are talking. We are finally discussing it. I follow Trinetra Haldar, Trin Trin. Oh yes. She's a rock star. Yes. So I think it's great to see people from the community being so intelligent and creating a mark of their own. And you only get to know when we've come a long way from Maharani to Manvi in 2021. So I guess they are getting all the respect now, and it is long due. And I think projects like this and films like this actually help us do that. This is a little funny, but what about that entire sexy body you made for Manu? What happened to that? अरे यार, दिल टूटा? उसको बहुत ज़्यादा दिल buy टूटा करते है, वक्त। पर मुश्किल भी होता है मेंटेन करना. I mean, Frankly speaking, I had taken 6 months and I was working out like a beast, eating like a you maniac. were looking like that. 140 grams of proteins every day. It was unbelievable. मुझसे हो भी नहीं रहा था. मैंने कहा भाई बस करो, मैं ये बंदा हुई नहीं. I mean the frame, मुझे वैसे फुल ऐसे चंडीगढ़ के ना सेक्टर 10 के बाद वो लड़के नहीं अपने गबरू और फुल एकदम व्हाइट कुर्ता पजामा मसल्स फुल करके हम लाइक फुल फील चल रही है. But for the film, I can do anything. For the character, if I have to put on weight, lose weight, do whatever, go bald for Bala, I can But just does do it that. hurt when it's such a... I know. It does because again I had to lose weight for Dr. G, play a student, and lose another 15 kgs, cut down. Like, क्या हो रहा है ये? So it's you're an actor. You have to just be a chameleon. Lastly, Ayushmann, what does a film like A Chandigarh Kare Aashiqui means for your filmography? Considering that, of course, it's progressive cinema. Of course, you do path-breaking roles. But as Ayushmann Khurrana, what does such film mean when people come up to you, tell you that no matter what, of course, criticism is always there in every part and people will be having their opinions. But hey, you started the conversation and thank you. How does it feel? Because I know I managed to see it 2 days before, even reviews could happen. Yeah. And a special screening, and I was speaking to a couple of friends who are from the same community, and my first reaction to them was, I don't know the nitty-gritties of how it should be done, but you finally have something to go out and watch with your families with a smile, because you don't have to load yourself that it's going to be a serious piece of cinema, but they have done it so beautifully with laughters and family and values. So how do you take it when people come and compliment you? You feel validated that your choices are getting resonated and people are empathetic towards the community, and you feel victorious in a way if you can bring a small change, if you just can alter the thinking of one person, just one person. I think that's a great victory, and I think it will be remembered as a benchmark or part of the legacy. Exactly. Or if you look back to this film after 30 years, it will be known as a conversation starter, the first of its kind. So I think it feels great. Thank you so much for doing this, for Peeping Moon with us, and I can't thank you enough. Thank you, Ankita. Thank you so much.